अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बेहतरीन डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। इसके लिए पिक्सेलैब में आएंगे और ये में आके यहाँ पे हम अपना एक नाम लिख लेते हैं। नाम हम लिखेंगे इरम। इरम हम नाम लिख लेते हैं, इरम इस तरह से। और नाम लिखने के बाद इसको बढ़ा कर लेते हैं। बढ़ा करने के बाद ये भी फ़ॉन्ट में आएंगे और जो इसका फ़ॉन्ट्स है जो इसकी तरफ से दिया गया है पिक्सेलैब की तरफ से, हम उसी का फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले। तो आम रेसलर ये ले लेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। थोड़ा इसका स्पेसिंग जो वर्ड्स में स्पेस है वो थोड़ी कम है तो इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आके ये बड़ा होने के बाद यहाँ पे हम इसके नाम के ऊपर एक पीएनजी हम यूज़ करने वाली हैं। तो पीएनजी के लिए इंपोर्ट में जाएंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, उसका बैकग्राउंड ब्लैक है वो रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए यहाँ पे आएंगे, इसको ब्लैक कर देंगे और ये पूरा ख़त्म हो चुका है इसका ब्लैकनेस। और इतना का ब्लैकनेस अभी भी बाकी है तो उसका ब्लैकनेस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, कलर में आएंगे, कलर में आके इनेबल करेंगे और यहाँ से वाइट कलर ले लेंगे। वाइट कलर ले लिया, लेने के बाद इसको ओके कर देंगे। इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद लेयर पे आएंगे, डायरेक्ट इधर जो आपको दिख रहा है डबल, हाँ वहाँ पे आएंगे और ट्रांसपेरेंट जो सबसे ऊपर है ट्रांसपेरेंट में क्लिक करेंगे। मेमोरी पे करेंगे, सेव एज इमेज पे करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अल्ट्रा पे रख के सेव टू गैलरी कर देंगे। इसके बाद स्विच करते हैं PS टच एप्लीकेशन की तरफ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं हम पिक्सेलैब में बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम नेम इंपोर्ट करेंगे, जो हमने पिक्सेलैब में बनाया है नेम, हम वो इंपोर्ट करने वाले हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे इरम है वो इरम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसमें म्यूज़िक का आप इंजॉय कर सकते हैं।